one-day workshop being organized by National Development Foundation in collaboration with the Directorate of School Education and Directorate of Samagra Shiksha. I warmly welcome our today's worthy Chief Guest Joint Director, Professor Dr. Sindhu Kapoor, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining us. Rajiv Khajuria, sir, CEO, ma'am, Arti, ma'am, and all the participants, distinguished participants from different schools of Jammu and Samba division. I welcome you all. I have been given the opportunity to just speak about to give a brief about today's event actually. The thing is, the day when we launched ECCE formally in J&K, probably in 2016, we were into this throughout the state. Out of many obstacles, one which was very significant during the successful implementation of ECCE project in the state, the one which we witnessed, which came out prominently, was the orientation and preparation of our school heads regarding the launch of ECCE. Whenever we went in the field, and the most difficult thing which came our way was how to convince the school heads regarding the importance of ECCE, how to implement ECCE, how to build liaison with the community, how to convince parents, and how to spread the message of quality ECCE in schools. So NDF has emerged as chief partner in all these events and all these adventures of ours, because whenever we actually required their help, be it in content development, be in capacity building of teachers, orientation of school heads, or even liaising with the system functionaries, like we have Samagra Shiksha or Directorate of School Education across the divisions, or for that matter SCERT also. So we have always sought the help of NDF. So today is the occasion when actually we collaboratively planned for this. The topics which we selected and the participants which we selected, we actually kept this in mind to what to send the message across, how to orient them. So actually the title was chosen as ECCE leadership. So the term ECCE and the leadership, they go hand in hand. Whenever we say a school head is a school leader, but when we talk in the context of ECCE, so we always say a school leader has to be a leader in ECCE also. So how to do that, how to achieve that objective, how to go about it. So for that matter, we have chosen the session, very meticulously the session was chosen. Professor Dr. Sindhu Kapoor, Joint Director SCERT, to please come on the rise and inspire us all. सभी को नमस्कार. President NDF, Shri Rajiv Khajuria, CEO, Madam Arti ji, Shri Kumar ji, my fellow colleagues from School Education Department, worthy HOIs and coordinators, ECCE, School Education. At the very outset, I am very pleased to be here amongst you all today. And I need to congratulate NDF in particular and Rajiv ji for having keen interest in the area of children's rights and their right to education. NDF is already doing immense service in liaising with Directorate of School Education and Samagra Shiksha for having achieving our desired goal of taking good care of all the children, and with the motto and the mission of the welfare of each and every child who deserves his or her due in the area of education, nutrition, health, that is the wholesome personality development, which comes under the Department of ECCE
early childhood care and education. The MEP which has come out now talks about first formative fundamental years of child in the field of education up to his or her class second. I think this has opened up many vistas along with various challenges to the education department, deciding the roadmap ahead. Identity is very important. And in order to establish connect with whatever group we are interacting, maybe of small children, maybe of your age, our age, और MEP का उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस भी है। मातृभाषा, मातृभूमि, vocal for local. Derive the examples from your local vicinity. Train the minds to think globally, but make them act locally. Examples from their vicinity. Examples from their own environment to which they are already familiar with will make them more confident, and they will start establishing some kind of connect with the world outside. Thank you so much. My best wishes to one and all. Thank you. Now I request Mr. Rajiv Khajuria, President NDF, to please deliver the vote of thanks. Professor Dr. Sindhu Kapoor, Joint Director SCERT, Arti ji, CEO NDF, Sunny, Program Manager NDF, resource persons Jaswinder ji, Dr. Sarita, and educational administrators attending this workshop, I will say as the educational leaders. This workshop, I think, is of utmost importance because the understanding and the leadership of you people will determine the quality of early childhood care and education delivered through the pre-primary classes of the kindergartens established in the schools working under you, as in the capacity of, I think, cluster heads. Madam Sindhu Kapoor and I totally agree with her that before coming up of the NEP, this component was looked after by the Anganwadi workers in the Anganwadi centers, and no doubt while delivering the 7 services through Anganwadi's government intended to deliver the basic service of this foundational numeracy and literacy, but being a civil society representative, I am of the view that despite having done good work in other fields, Anganwadi workers could not replace a government teacher who is well trained, who is B.Ed, who know the child-friendly methods of dealing with the children. Madam has also highlighted the ways for developing cognitive and other capacities of the child to make them fit in the system. As a country, I was hearing a speech of the Prime Minister a couple of days before. He was saying that our Government of India's mission is that no child should be kept behind. And when we talk of this our constitutional commitment with regard to right to education, although it starts from 6th to 14th year of age as far as this act goes, but the coming up of NEP and the mention of ECCE with clear-cut guidelines, it has been made clear that the rights of the children start from 0 to 18 years, and it is enshrined in
the recent act brought by the Government of India, Bharatiya Nyaya Sanhita, in section 2B, the definition of child is given as anybody below the age of 18 years is a child. So I will not go into the detail. I think a couple of months before a workshop was held at Samagra Shiksha, in which the participants from SCERT, School Education, UNICEF, National Development Foundation and other Prof International and other partner organizations working in the field of early childhood care and education was held, and in those 7 days a curriculum was developed which was in line with the national framework, and today's workshop's main objective was to discuss what was deliberated in that workshop, what curriculum is has come out and how to assess the outcome of that curriculum. So based on that, we are holding this today's workshop. Since Dr. Jaswinder ji and Dr. Sarita were in that very workshop, that is why we invited them and asked them to share what was discussed there with the HOIs, so that there is a positive outcome of our ECCE component. So I was here to deliver vote of thanks. Since I am working with Dr. Sindhu Kapoor in another platform for the last 1 year, I have learned a lot from her. She is a woman of commitment, and I am confident that under her leadership, as she has just said, that collaborations will boost up, and SCERT will deliver the role which, for which it is intended to, and it will become a premier institution of research in the field of school education. I thank Professor Sindhu Kapoor for having spared her valuable time, and I thank you all also. I am aware of what is going on in school education these days, examination and lot of assessments and many things. But since you people have come, it will be a sort of refresher for you also. So thank you, Arti and other people who are here. I thank Puneet ji also for having come with Dr. Kapoor. So thank you very much. नहीं फॉर्मल वाली बात नहीं, बट मैं उसके सक्सेसफुल होने के नेक्स्ट ईयर 2017 में पुट अप अ प्लान विद द गवर्नमेंट, विद द डिपार्टमेंट. तब हम लोग ने सेक्रेटरी होते थे, बाबू शाह सर हुआ करते थे, एंड भारी सर वाज अ मिनिस्टर एट दैट टाइम, कि हमने कहा कि आप पूरे स्टेट में इस चीज को लॉन्च करें, मॉडल किंडरगार्टन सेक्शंस. तो हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल किंडरगार्टन प्रपोज हुए. जम्मू में बाजार का सावा से मैम आई हैं, इनका स्कूल था. विजयपुर सावा से जो मैम आई हैं, रेंटल सिटी आई हैं, वो तो ये स्कूल जो थे उस टाइम स्कूल से पर वहाँ किंडरगार्टन एस्टैब्लिश किए थे. दैट करिकुलम, दैट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट, टीएलएम, वो सब चीजें, एंड देन हाउ टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ दोस किड्स टू फॉर्मल प्राइमरी स्कूल. अगर आपके स्कूल में फर्स्ट ऑनवर्ड क्लासेस हैं तो उन बच्चों को प्री प्राइमरी से फर्स्ट के माहौल में डालना, या आपके स्कूल में प्राइमरी क्लासेस नहीं है तो नियर बाय मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां तक उनको ट्रांजिट कराना, ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी स्कूल है. मैम नमिता मैम की बात से बड़ा एग्री करती हूँ कि कोई टीचर्स भी मैम जिनके साथ हम डील करते हैं, फेस्टिवल वर्कशॉप के साथ करते हैं, तो SCERT स्टूडेंट टीचर और डायरेक्टरेट के लेवल पे वो ये कहते हैं मैम हमसे पहले हमारे स्कूल हेड को समझाइए, वो हमें करने नहीं देते. कुछ अच्छा हम करना भी चाहें, कुछ अपने से एफर्ट्स करने भी चाहें, तो वो चीज़ को डरने से होते हैं. एंड देन हम लोग 9th 10th में क्लास लेते हैं, फिर एक क्लास हम आते हैं वहाँ पे लेते हैं, यानी एक टीचर आ रहा है इंग्लिश पढ़ाते जा रहा है टीचर के बच्चों को, एक टीचर आ रहा है हिंदी पढ़ाते जा रहा है, एक आ रहा है मैथ पढ़ाते जा रहा है. और ये ओरिएंटेशन होना कि यहाँ हिंदी मैथ इंग्लिश कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ और है इसी में. ये ओरिएंटेशन होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम डोमेन्स की बात करते हैं, हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉग्निटिव मैम सुबह से कहते थे, हम लोग यहाँ पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में स्कूल रेडीनेस की जब बात करते हैं तो स्कूल रेडीनेस डज नॉट मीन बच्चे को ABC पहले से आई होनी चाहिए. हम हमारे यहाँ क्या करते हैं स्कूल के टीचर कि मैं भी कई बार बोलती हूँ कि आपके पास कौन सी उम्र का बच्चा जो KG में बैठा है, तो कहते हैं मैम उस बच्चे को बिठाया स्कूल हमें कुछ आता नहीं था, फर्स्ट में बिठा नहीं सकते थे, उसने उसको कुछ भी नहीं आता था. पहले दिन ABC में उसको आ रही थी 1 तो उसको हमने KG में थोड़ी देर बिठाया, जब वो 1 to 10 तक सीख लेगा, A to Z सीख लेगा, वो फर्स्ट में जाएंगे. अगर ये कॉन्सेप्ट का स्कूल रेडीनेस है तो प्लीज चेंज दैट. स्कूल रेडीनेस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है
स्कूल रेडीनेस मतलब बच्चा फिजिकली और इमोशनली रेडी है कि नहीं। जब बच्चा स्कूल में आता है तो सीधी लाइन में चल भी नहीं पाता है, उसको जिग-जैग लाइन में हम चलाते हैं कि उसका बैलेंस है कि नहीं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली जब चेयर पे बैठता है तो बार-बार गिर तो नहीं जाता है नीचे। क्या वो ऐसा बच्चा है जो इमोशनली अभी तक अपनी मदर के साथ अटैच है, अभी तक टीचर के साथ अटैच नहीं हुआ, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल नहीं रहा है, अभी भी रोता रहता है, पूरा साल वो रोता ही रहा है, क्या वो बच्चा इमोशनली रेडी है? ये रेडीनेस है एक बच्चे की। उसके बाद हम लोगों को अपना स्कूल भी रेडी करना है। स्कूल में रेडी करने का मतलब होता है कि आपके पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स आपके पास हैं, क्या आपके पास जो पूरी बिल्डिंग है इस तरह की है जो चाइल्ड सेफ हो, उस उम्र के बच्चे के लिए सेफ हो, या आपके पास जो स्टाफ है वो रेडी है कि नहीं। तो स्कूल की रेडीनेस में स्टाफ की रेडीनेस भी आती है कि आपका स्टाफ ओरिएंटेड है कि नहीं, ट्रेन है कि नहीं इस चीज के लिए, क्या अभी भी उसने कॉपी पढ़ ली, 3 in 1 नोटबुक ले आए और ए से शुरू कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन वो अ से अनार लिखा रहा है, क्या यही माइंडसेट से टीचर आपका है कि उसको ओरिएंटेशन ईसीसी में हो रही है। सो दैट इज रेडी स्कूल्स। एक पेरेंट ने बीच में पॉइंट आउट किया था कि टीचर कॉपीज चेक नहीं करते, उसने कॉन्डिशन यहाँ पे आगे बड़ी बात उनसे उसी बता रहे थे कि हमारे बच्चे की 2 दिन से कॉपी में टीचर ने टिक नहीं मारा है। वो एक सिचुएशन और वो बार बार पेरेंट्स जो है सबको इंडिकेट कर रहा था कि बोलिए, आप ही बोलिए कि टीचर कॉपी चेक नहीं करता, ये वो एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? बिल्कुल, एक बात मैं शुरू में की कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है। देखिए ये सिचुएशन तब नहीं आएगी जब ऑलरेडी पेरेंट्स इस चीज को लेके अवेयर और ओरिएंटेड होंगे, तब से बार-बार फोकस करती है पेरेंट्स की ओरिएंटेशन। आपकी बात अगर वो बात सिचुएशन आती है टाइम में जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, एक दिन में चेंज नहीं आता है, यही चीज हमें बार-बार इंसिस्ट करनी होती है। एवरी टाइम कम अप विद दिस क्वेश्चन, हमारा आंसर एक ही होना चाहिए, वो आंसर वही होना चाहिए जो हम यहाँ से सीख के जाते हैं कि ये चीज कॉपी चेक करने का एक तरीका है, जो मैं आपको बता दूं तरीका है, वो भी अपने माइंड में आना चाहिए। जब हम छोटे बच्चे की गलती निकालते हैं, जब हम सर्कल कर देते हैं उसको, तो हम उसका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। इस एज में बच्चा नेवर लर्न्स फ्रॉम फेलियर्स। हम कहते हैं ना फेलियर हमें सिखाते हैं, पर एडल्ट को सिखाते हैं, फेलियर छोटे बच्चे को कभी नहीं सिखाता है। आपने काटा मारा और अगली बार कभी ये नहीं लिखेगा, उसको नफरत हो जाएगी ये लिखने से, क्योंकि उसको काटा लग रहा है, उसको सर्कल हुआ है, रेड पेन से उसको सर्कल हुआ है। हमेशा उसके साथ बिना कट किए उसको सही से लिखना सिखाइए, क्रॉस मत कीजिए। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर जो होता है ना अप टू द एज ऑफ 6 बहुत मैटर करता है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। पर अपना पेरेंट्स को ये बताएंगे नहीं जब तक बताने की बात नहीं है, कन्विंस होने की बात है। ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट, ये ऑब्स्टेकल्स हर जगह आते हैं, बट हमें अपनी अप्रोच कंसिस्टेंट रखनी है। हम ही बदल जाएंगे, वो कहते रहे चेक करो और अगली बार हमने गुड और क्रॉस करते वेरी गुड स्टार देना शुरू कीजिए। और दूसरी बात ये कि स्टार और वो स्माइली देना भी बैड है। इवन एनसीईआरटी लेवल पे जो हम बात करते हैं वो तो कहते हैं इस बच्चे को गलती निकालनी नहीं है, इस उम्र के बच्चे गलती करके ही सीखेंगे, गलती करने दो इनको। जिस दिन आपने इनको स्लब किया उस दिन बेचारे शांत हो जाएंगे। जिस दिन बच्चे तोतली भाषा में बात करना शुरू करते हैं, हमें उनको बार बार जलील करते हैं कि हमारी किन चीज़ों पे हमारे गुजर बच्चे आते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, रैम बच्चे हमारे स्कूल में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हमें उनको पहले कॉन्फिडेंस से कंफर्टेबल माहौल में लाना होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि अब आप जो है हमारी लैंग्वेज जो है वो कॉपी करना शुरू करते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। बट वी हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट इन अप्रोच। और दूसरी बात ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पेरेंट टू पेरेंट वेरी करता है, फिर भी आप उनको बोल भी दीजिए कि हम चेक करते हैं, लेकिन हमारे चेक करने का तरीका अलग है, कुछ तरीका अलग से हम डिवाइस कर सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दैट। Now I request Dr. Sarita Sharma, Assistant Coordinator, Field Primary, to proceed the technical session on role of cluster heads, HOIs, in monitoring assessment of ECCE component. So, सबको सादर नमस्कार, आदाब, and respected CEO sir and Chairman NDF, मैं राजीव सर का पर्सनली बहुत थैंक करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक पे दैट इज द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, बिकॉज असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने सारा पैडागोजिकल प्रोसेस देखा, ईसीसी के बारे में समझा एंड पॉलिसीज के बारे में सब जाना आपने कि किस तरह से करना है, बट नाउ द असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आपका ये आता है कि हमने पैडागोजिकल प्रोसेस से एक बहुत अच्छे प्रोसेस से हमने बच्चे को पढ़ाया एंड हाउ टू असेस व्हाट इज असेसमेंट, व्हाई डू असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम,
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है। और हमारी एनईपी 2020 को लेकर के भी असेसमेंट का जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिंसिपल्स के पास इतनी पावर्स हैं, वो क्लस्टर हेड हैं और आप सब प्रिंसिपल्स हैं और प्रिंसिपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप सबके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप सुबह से सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के बाद से मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी, बिकॉज ये वाला जो असेसमेंट का सेशन है ये बहुत लेंथी होने वाला है। इसमें हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के होलिस्टिक कार्ड जो है वो एनसीईआरटी ने बनाया है और उसको स्ट्रेंथन किया है एससीईआरटी ने, और उसके बाद ये फील्ड में आ गया है और अब आगे सब स्कूल्स में जाएगा। और वही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आप सबको भरना है इन बच्चों को लेकर के, इन पर्टिकुलर विद ECCE। तो जब हेड जो है, जो लीडर है, जो स्कूल का लीडर है, जो क्लस्टर का लीडर है, जो कम्युनिटी का लीडर है, अगर वहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली टीचर को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ये वाली। सुबह से बैठे थक गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द काज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बिकॉज डीब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डीब्रीफ नहीं करेंगे तो फिर आगे लगेगा कि क्या हो रहा है। एंड दिस अब हमने ये एक्टिविटी कराई। अगर हमारा हेड जो हमारा प्रिंसिपल है, अगर वो ऐसी एक्टिविटी करेगा तो टीचर में मोटिवेट होगा, स्टूडेंट भी। अब इन दो चीजों को मिलाना, इनको रब करना, एक हमारा राइट ब्रेन है, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है। जब हम क्लैप करते हैं तो ये सारी फिंगर्स का मिलना, इनके पॉइंट्स का मिलना और नर्व्स का प्रेस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अब मैं इसको कोरिलेट करूंगी कि ये हमारा इस टॉपिक के साथ किस तरह से कोरिलेट करता है। अभी मैम ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें माइंड की डेवलपमेंट आती है, उसमें लैंग्वेज आता है, एक राइट ब्रेन आता है, एक लेफ्ट ब्रेन आता है, जिसमें लैंग्वेज की बात होती है और राइट ब्रेन पे रीजनिंग होता है। सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्टिविटी है, जो कि आप सुबह भी कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये अगर रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे तो वो एनर्जी जो है वो आपके बॉडी में से निकल के आपके फेस पे जाएगी, आपकी आईज पे जाएगी और फिर तरह से पूरा सिस्टम हमारा जो है वो एक्टिवेट होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज हम करवाएंगे तो उससे बच्चा भी, टीचर भी, सब मोटिवेट होंगे। अब हमारा आता है व्हाट इज असेसमेंट। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाई डू असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम? व्हाट इज असेसमेंट, व्हाई असेसमेंट? सिंपल व्हाट इज असेसमेंट। हाँ, असेसमेंट के छोटे से छोटा, ज्यादा नहीं। मैं आगे मैंने चलूंगी आगे, अगर कोई नहीं बोलेगा तो। अब असेसमेंट मींस कि इवैल्यूएट करना, Yes. परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि क्या था, क्या है और कैसे उसको और अच्छा किया जाए, किया जा सकता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। To understand the levels and To understand the levels and needs and basic requirements. बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट कोई और बोलेगा? बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि असेसमेंट है क्या। सर नेक्स्ट स्लाइड। असेसमेंट के बारे में मैंने आपको ये पूरा पहला है कि असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरस्पेक्टिंग, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स। ये आ गया पूरा इसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब हो गया, फॉर का मतलब होता है के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए असेसमेंट, और समेटिव का मतलब होता है ये जजमेंटल असेसमेंट होती है जो एंड ऑफ द सेशन होती है। जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है U1, U2, जैसे आप देखते हैं ना यूनिट 1, U1, U2, फिर आता है उसके बाद T1 आता है, T2 आता है, देन फाइनल आता है। चाहे वो 3 महीने का हो हमारा सेशन, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, जो हम T1, T2, ये U1, U2 लेते हैं, ये सारा समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है। और आज की इस वर्कशॉप में इसको आगे चलाने के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर अपना दायां हाथ आगे करें और आज हम एक प्रतिज्ञा लेंगे।
हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम बच्चों की शिक्षा के अधिकार को यकीनी बनाने में और एनडीपी 2020 को पूर्णतः लागू करने में अपना सहयोग देंगे। हम सभी लोगों को बाल शिक्षा के समर्थन में और सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम सभी बच्चों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल यानी ECCE और शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े और बड़े होकर देश का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Mr. Rajiv Khajuria, President NDF, for his brief and keynote address. वर्दी जगदीप पाधा सर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू, जनाब अजीत शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर क्वालिटी समग्र शिक्षा, हमारे एजुकेशन लीडर्स जिनके बिना ECCE को स्कूलों में यकीनी बनाना मुश्किल है, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी लीडरशिप में जो ECCE का कंपोनेंट है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, तो मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिले। ये अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और रोते हुए बच्चे को हंसाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हमें करता है। और चूंकि भारत सरकार का ये भी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जानते होंगे कि भारत सरकार की इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कमिटमेंट है कि बाई 2030 जितने भी बच्चे हिंदुस्तान के अंदर छोटे बच्चे हैं, इन ये सभी बच्चों को हम स्कूल रेडी करें, ठीक है। और इनको स्कूल रेडी कैसे करना है, पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू होता था, अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पिक्चर में आया है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर हमारी कमिटमेंट कहें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर कमिटमेंट कहें, UNCRC को लेकर कमिटमेंट कहें, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दिस इज द पार्ट ऑफ द वाइडर कमिटमेंट्स व्हिच वी हैव मेड and bound to by the Constitution of India, and for which we are accountable to the international community also, as we claim to be the developed country. For the last few years we are asking that we are a developed country, and in few years we are becoming this and becoming this, and this is a basic indicator that how we keep our children in the families as well as in the institutions. So I will not remain much between you and the two dignitaries here. Thank you very much. I take the opportunity and I invite Arti Sharma sir in the interest of time to say a few words, and then Padha sir will address you. Very afternoon to all of you. First of all, I extend a warm greeting to you to be the part of today's workshop, which we in Samagra has organized for you people to sensitize you regarding what's the role of the head of the institution and cluster head in implementing the various initiatives of the Shiksha Government of India with regard to the ECCE. And I, on behalf of my project director, he was supposed to be accompanying him for this session, but because of some urgency, even my senior officer Padha has to take the leave from you also, because tomorrow Honorable Lieutenant Governor sir is taking the review of the education department, so every officer is today awfully busy with regard to our presentations there. So we will not be here. I rather would like to be part of you people since morning, but because of some
scarcity of time, I could not be there with you. So let us come straight to what's the role of the HOIs, our cluster head of the school nodal officer with regard to ECCE is concerned. First of all, let me clarify you, that was a question you were raised by our school education secretary, sir, right in the morning to me, that what we are doing in JMK with regard to the ECCE, what we have achieved, where is the lacuna, who is the stakeholder, who are not discharging their duties, pinpoint them. There was a morning call by our secretary, sir, to justify all the points, because one thing is very positive on which we are moving very steadfast even at the national level. That what is that positive side? The positive side is the enrollment in ECCE. A wonderful thing on which nobody can doubt us, because you know one of the parameters on which our progress is being monitored by even ministry or even by anyone else, that is our UDICE. And in UDICE during 2022-23, the enrollment of the ECCE in government schools has risen to 1,56,230, and that was 1,40,000 to previous year. Means 16,000 students we have enrolled in the last year, and currently 23-24 UDICE is going on, and we are expecting 10 to 20% rise on that. So this is a very positive sign that huge chunk of the students which are previously there in the government private schools are in Kendriya Vidyalayas or somewhere else, or even you say in social ICDS centers. No, they are migrating to our schools. It is a very positive part. It means we are doing something for them. That's why people have got the you say trust and belief on us. Our officers are doing. But what is the role now comes to the HOIs, for which this workshop, because when Khajuria sir approached our director sir and met me, we discussed so many things. So he also made a request, and I also took this, that it is now the responsibility of the HOIs to take care of these kids, which are those have been brought to your schools. तो जुडाइस तो एक पैरामीटर हम क्या लाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बार जब हम जाते हैं तो वो तो जुडाइस की फिगर को देखते हैं, कितने स्कूल, कितने बच्चे, क्या है क्या नहीं है, कहां पर रोड है, कहां पर रैंप है, कहां पर पानी है, कहां बिजली है। मेरे से अगर मेरे सीओ साहब बैठे जाते हैं कि ये कंपोनेंट इन्होंने खूब निभाया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो पादा साहब को जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, इतने बड़े ऑफिसर के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज नहीं होता है, ऐसे ऑफिसर के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो, ये स्टैंडिंग ओवेशन होती है। इन्होंने हैंडल किया, प्लीज टेक, थैंक यू। तो ये इन्होंने करके आए हैं वहां से, तो आज हम कहीं पर खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में और कैसे करेंगे, हाउ कैन वी प्रोग्रेस? यूडाइस को देखिए, एनरोलमेंट को बढ़ाइए, एनरोलमेंट ड्राइव करिए, फिर आता है उसके बाद आता है कि ईसीसी को जब हैंडल करना है तो किस तरह से हैंडल करेंगे। हमने इसके लिए मैं एनडीएफ का, यूकेएसडब्ल्यू का, यूनिसेफ का, ये तो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनका SCERT का, मैं तो सबका शुक्रिया हूं कि जो प्री प्राइमरी के लिए किताबें होती हैं जो हम बना के देते हैं, जिसकी Thank you sir for inspiring us all. I kindly invite Mr. Jagdeep sir to share his valuable insight and wisdom with us. Respected Rajiv Khajuria जी, जो मैं नेशनल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एजुकेशनल फाउंडेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सरबराह हैं हमारे, क्योंकि जो इतना काम नेशनल उस लेवल का नहीं करते जितना एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करने के लिए, उसके रेस करने के लिए हमारी हेल्प करते रहते हैं। और उनके साथ बैठे हुए मेरे स्टेट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा श्री अजीत शर्मा जी, और इस यूनिसेफ के, एनडीएफ के जितने भी मेंबर्स हैं, और मेरी एक पूरी फैमिली जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि मैं जिस भी सिस्टम में काम करता हूँ मैं एक फैमिली की तरह लेके चलता हूँ सभी को, तो ये पूरी मेरी एक फैमिली है। सबसे पहले मैं इन चीज़ों की बात करूंगा कि जिसके लिए ये ECCE के लिए वर्कशॉप रखी गई है, वो हमारा एक बेसिक्स है जहां से हमने इस सिस्टम को शुरू करना है। और आपको पता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पहले तो ये एक ऑप्शनल था, लास्ट ईयर भी हो गए थे, लेकिन इस साल 6+ पे ही बच्चे को अपने फर्स्ट क्लास में ले जाना है। तो फाउंडेशन जो है
वो हमारी जो केजी क्लासेस हैं वो हर स्कूल के अंदर बहुत जरूरी है। बाकी जैसे मैडम ने कहा, जैसे हमने दूसरे सिस्टम में किया कि प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे थे उनको गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ टैग किया, इसी तरह से हमारा प्रयास चल रहा है, शायद उसमें भी हम कामयाब हो जाए कि हम उन बच्चों को जो नियर बाई हाई स्कूल होगा, क्योंकि हायर सेकेंडरी, जैसे रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल का उदाहरण दूंगा कि रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को मैं रणवीर के उसमें नहीं ला सकता, जुडाइस पर नहीं ला सकता, लेकिन उसको डोका हाल के साथ टैग कर सकता हूं। तो ये प्रयास हमारा जल्दी ही समग्र शिक्षा के साथ मिलकर हम इसको कामयाब कर लेंगे और हमारा हर बच्चा जो है वो जुडाइस के अंदर आ जाएगा। आपने ECCE के बारे में काफी कुछ जाना, काफी वो उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये पार्ट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो 29 जुलाई को 2020 में इंप्लीमेंट हुई थी और चौथा साल उसका जो है वो चल रहा है। उसकी जो फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 5 उसका दिया हुआ है, 5 + 3 3 + 3 + 3 + 4, उस सिस्टम में जो 5 + 5 पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पार्ट में जितनी आप नींव किसी की मजबूत कर लेंगे बच्चे की, उतना ही वो आगे चल के सक्सेसफुल होगा। हर शाम अपने आप को देखें कि हमने आज क्या काम किया, हमने बच्चों की बेहतरी के लिए क्या काम किया। जैसे मैं घर जाता हूं, मैं अपने आप में अपनी असेसमेंट करता हूं कि आपने किसी को कितना सुकून दिया, किसी को कितना नुकसान पहुंचाया, ये भी देखता हूं। ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि मेरा पर्सनल उससे है, लेकिन कई बार होता है कि हम जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं तो किसी को हो सकता है 4 किलोमीटर घर से दूर जाना पड़ा। बाकी क्योंकि टाइम काफी हो गया है, मैं एक शेर जो है जरूर कहूंगा राजीव जी के लिए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश का काम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी हैं काम निकले। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।